हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखेंगे खोज स्कॉलरशिप टेस्ट के क्लास 5th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज गिवन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। विच इज गिवन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो 8 ये तो सबसे बड़ा हो गया, तो ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, तो ये तो ऑप्शन आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ये देखते हैं, -7 -7 के बाद -2 -1 एंड 8। तो -7 से बड़ा -2, यस, -2 से बड़ा -1 सही है, और -1 से बड़ा 8। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 79 ग्राम इज इक्वल टू दी हाउ मैनी किलोग्राम्स। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 grams, then which is equal to 79 gram. 79 gram. तो 79 divided by 1000, 0.079 gram, 0.079 kg. So option number B is the right answer. Next question number 3rd, an angle of 195 degree is, angle कितना है? 195 degree, greater than 180 degree and less than 360 degree. What is right angle? जो 90 degree का हो, straight angle 180 degree, acute angle less than 90 and reflex angle is between 180 and 360. So option number B is the right answer. Next question number 4th, pentagon has sides. pentagon की कितनी sides होती है? पेंटागन की कितनी साइड्स होती है? 5 साइड्स होती है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, डिफरेंस बिटवीन 10 डिग्री एंड 4 डिग्री सेल्सियस। 10 - 4, 10 - 4 is 6, so 6 degree Celsius, so option number A is the right answer. Next question number 6th, which is the greatest in the value? क्या गिवन है? 0.8, 0.08 and 0.80. So option A और option C तो same हो गया, and 0.8 is greater than 0.08, so option number D is the right answer of both A and C. Next question number 7th, A is one part of line that starts at single point and extends indefinitely in one direction. सिंगल पॉइंट से शुरू होकर बहुत इनफाइनाइट तक जाता है, कौन सा होता है? रे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द right answer. Next question number 8, a 0 is subtracted from a number, then answer is number itself, like 5 minus 0 is equal to 5. So option number B is the right answer, number itself. Next question number 9, which of these shape will look same after a quarter turn? अगर आप क्वार्टर टर्म मीन्स 90 डिग्री फोल्ड करो आप, तो क्या सेम दिखेगा? सर्कल को आप फोल्ड करोगे क्वार्टर तो सेम ही दिखेगा, स्क्वायर को करेंगे तो भी सेम ही दिखेगा, बट रेक्टेंगल नहीं दिखेगा। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर राइट, सो बोथ ए एंड बी आर दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट इज 3/10 of 1 hour? 3/10, 1 hour is 60 minutes, 0 0 cancel, 6 3 जा 18 minutes. So option number C is the right answer, 18 minutes. Next question number 11th, value of this 4/5 divides by 5/7. 4/5 multiply by 7/5. So this becomes 28/25. So 28/25. So option number B is the right answer. Next question number 12th, 5.867 digit 6 is in the place 5.867 after decimal. 10th प्लेस पे कौन है? 8. 6th प्लेस पे कौन है? 6 है 100th प्लेस पे, और 7 है 1000 प्लेस पे. 10s, 100s and 1000s, so option number D is the right answer. Next question number 13, value of this 15 minus 3 multiply by 2, 3 2 ja 6, 15 minus 6, so answer is 9. So option number C is the right answer.
Next, question number 14. Fraction having different denominator are called. Denominators are different, so this is called unlike fractions. In like fraction, denominators are same. You say 1 by 5 and 2 by 5. They have same denominator, so these are called like fractions. And 1 by 2 and 3 by 7, different denominators, so these are called unlike fractions. So option number B is the right answer. Question number 15. In BODMAS, D stands for division. Bracket of division, multiplication, addition and subtraction. So D for division. So option number C is the right answer, division. Next, question number 16. Find the product of this 6312 multiply by 68. So 6312 multiply by 68. 6312 multiply by 68. 8 to the 16. 9. 8 to the 24. 50. 6 to the 12. 7. 18. 37. So 6, 11, 13, 9, 12, 4. 4 to 9, 3, 1, 6. 4 to 9, 3, 1, 6. 4 to 6, 11, 12, sorry, 12. 4 to 9 to 1, 6. So option number B is the right answer. 4 to 9 to 1, 6. 7 plus 4, 11, 12. Next, question number 12. Find the dividend when divisor is equal to 79, quotient is 521 and remainder is equal to 14. We know that dividend is equal to divisor multiply by quotient plus remainder. So divisor की वैल्यू कितनी है? डिवाइजर इज 79 मल्टीप्लाई बाई 581 प्लस 14. मीन सबसे पहले क्या करेंगे? 581 मल्टीप्लाई बाई 79. 581 मल्टीप्लाई बाई 79. 9 72 7 7 8 जा 56. 9 9 8 5 4 4 5 8 9 9. रिमाइंडर कितना है? 14. 14 इसमें ऐड कर ले. 13 11 9 4 5 9 1 3. 4 5 9 1 3. Option number B is the right answer. Next, question number 18. In a city, 8,50,000 children and 5,79,389 children were given polio drops. How many children were left? So total are 8,50,000. 8,50,000 and 5,7,9,389. माइनस कर देंगे. 10 minus 9 1. 9 minus 8 1. 6 0. 7 2. 270 611. Option number B is the right answer. टोटल माइनस जितने लोगों को पोलियो ड्रॉप्स दी गई उसको माइनस कर देंगे. Question number 19. The perimeter of rectangle is 54 centimeter. Length is 12 centimeter. Find the breadth. Perimeter of the rectangle is 2 multiplied by L plus B. Perimeter is 54. Length is 12. And we want to find breadth. 54 divided by 2, 27 is equal to 12 plus B. So 27 minus 12 is equal to B. So this becomes 15 centimeter. So option number A is the right answer, 15 centimeter. Next, question number 20. 8 liters is equal to how many milliliters? 1 liter is equal to 1000 ml.
तो 8 लीटर में कितना होगा, मल्टीप्लाई विद 8, so 8 multiply with 1000, so is equal to 8000 ml. So option number C is the right answer. Next, question number 21. The longest chord of a circle is called. Longest chord means chord passing through the center, and which is called diameter of the circle. Radius नहीं होगा. Option number B, diameter is the answer. The longest chord of a circle is called diameter of a circle. Next, question number 22. Predecessor of 3040. 3040. Predecessor में इससे पहले, successor में बाद में, इससे पहले कौन आएगा, 3039. इससे बाद पहले 3039, इसके बाद 3041. तो 3039, ऑप्शन नंबर B is the right answer. Next, question number 23. The successor of this. ये क्या लिखा हुआ है आपका, 10 + 9 19. और क्या पूछा है आपको, सक्सेसर. तो 19 का सक्सेसर क्या होता है, 20. और 20 को रोमन में क्या लिखते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24. 4000 प्लस ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर. 4000, greatest 2 digit number is 99. So 4000 plus 99, 4099. So option number B is the right answer. Next, question number 25th. Mr. Raj have rupees 9200 in the bank. He withdraw 5000. How much money is left? Total कितने उसके पास है, राज के पास 9200. विड्रॉ कितने कर दिए, 5000. विड्रॉ मतलब निकाल लिए, तो कितने बचे लेफ्ट. निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल माइनस विड्रॉ. टोटल 9200 माइनस विड्रॉ 5000. सो 0 0 2 and 9 minus 5 4. तो रुपीज लेफ्ट 4200. सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर. Next, question number 26. If we multiply 0 by any number, what product we get? किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है. सो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, 0. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27. द नंबर ऑफ डेज इन 3 weeks. वी नो दैट 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में होते हैं सर 7 days. आपको कितने डेज के निकालने, कितने वीक्स के निकालने, 3 weeks. तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से. 7 3 जा 21. तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन 3 weeks इज 21 days. ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. राइट इन डेसिमल फॉर्म दिस नंबर. 14:7/10. तो 14 into 10, given that 14:7/10. So इन प्रॉपर फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाई 10, 140 प्लस 7, 147 डिवाइड बाई 10. राइट इन द डेसिमल फॉर्म 147 डिवाइड बाई 10. सो दिस बिकम्स 14.7. ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29. A area of a square is 16 centimeter square, then to find the length of the side. We know that the area of a square, क्या होता है, area of a square, side multiply by side. Area of a square is equal to a square. A square means side multiply by side. But a square is equal to, area कितना दिया हुआ है आपको, 16. और आपको क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ दिस साइड. तो स्क्वायर रूट बोथ दिस साइड. 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है. सो a इक्वल टू 4. ए क्या है, लेंथ ऑफ दिस साइड. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C, 4 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30. 7,08,005 is 1 million is equal to 10 lakh. So 7,08,005, option number B is the right answer. So this is the solution of the mathematics questions of the class 5th paper. Thank you.